Hello everyone, very good morning. I hope everyone is doing well. So today in the class, first we will be doing some questions from electrostats and gravitation. जिस portion को हम कल पढ़ रहे थे, ठीक है? There were so many questions left, so we will be doing that first. And after that, we will revise the concept of current and electricity. And in then next to next class, we will be solving. Sorry, in next class we will be solving questions from current electricity. ठीक है? So चलो question से start करते हैं. Everybody, give your time, give your attention, and do it. ठीक है? Yes. Good morning, everyone. चलो take your 1 minute and do it. Let me know your answers. Anyone got the answer? Okay, one correct answer. Very good. Others, please. You just need to put in the formula. ठीक है? So जल्दी से बताओ आंसर क्या आ रहा है. Okay, let me end the poll now. Only one answer I got, and that is correct. Chalo, so let's read the question and do it. There is an electric dipole, and that is placed at an angle of 30 degree with an electric field. So let's say this is the direction of electric field, and this is the direction of dipole. ठीक है? Angle between these two is given, that is 30 degree. Electric field का value is given, and value is how much? 2 into 10 to the power 5 Newton per coulomb. ठीक है? And it experiences a torque equal to 4 Newton. So torque is given here. How much? 4 Newton meter. Done it? Calculate the magnitude of charge on the dipole if the dipole length is 2 centimeter. So we already know dipole. Dipole क्या होता है? Combination of negative and positive charge, equal and opposite charges, these are, and separated by small distance. So let's say this small distance is A. In this case, the value of this charge is not given. ठीक है? ये given नहीं है. Distance is given. Distance given is how much? 2 centimeter. So dipole का value क्या होता है? कैसे लिखते हैं? Dipole value is Q into distance between them. Done it? And direction of dipole is taken from negative to positive charge. So if here I have drawn it like this, it means this is negative charge and this is positive charge. ठीक है? Now what is the formula of torque? Torque का formula हमें पता है क्या होता है? That is your P cross E. ठीक है? This is what P cross E. Now you put in the formula and try to get the answer. So torque is equal to mod of P, mod of E into sine theta. Torque ka value is given, that is 4 Newton. Mod of P we don't know. Let's say this is P. Electric field value is given 2 into 10 to the power 5. Theta is 30 degree. So this is half. Done it? So this is this. If you calculate P over here, ठीक है? P is how much? P is equal to 4 into 10 to the power minus 5 unit, right? And P can be written as what? Q into A. So Q into 2. This is centimeter, convert it into meter. So 10 to the power minus 2. And this is equal to 4 into 10 to the power minus 5. So Q is equal to how much? 2 into 10 to the power minus 3 coulomb. That is 2 millicoulomb. So correct answer will be your third one. ठीक है? चलो. So इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था. Simply you needed to put things in the formula. Now let's do this question. Okay. Everyone attempt it and let me know your answers.
Okay, very good. One answer I got. That's great. Okay, two correct answers. Very good. Just now I got one more answer, but you need to reconsider. Look at the diagram more carefully. एक बार ध्यान से देखो. Okay, three correct answers. Great. Everyone doing well? It's good. चलो सारे लोग आंसर करो प्लीज. Yes, Shruti. That will be good. Very good. Divya, Deepu, Shamila, Dolonoi, Marfeza, Minu, मनीषा. सारे लोग आंसर्स बताओ क्या आ रहा है. राजू. यू नीड टू लुक एट इट मोर केयरफुली. थोड़ा ध्यान से देखो क्वेश्चंस को. ठीक है. नाउ आई विल एंड द पोल बिकॉज आई हैव ऑलरेडी गिवन यू 1.5 minutes एंड मोर देन दैट आई शुड नॉट बिकॉज एग्जाम में यू वोंट गेट दैट मच ऑफ टाइम. अगर आता है तो 1 minute के अंदर हो गया होगा. So what is the question? There are six charges. Concept को समझते हैं इसमें क्या यूज होगा. They are kept at the hexagon of side D as shown in the figure. The work done in bringing a charge Q naught to the center of hexagon from infinity. So so initially हमारे पास क्या है. हमारे पास एक हेक्सागन है और उसके हर कॉर्नर पे क्या रखा हुआ है. चार्ज रखा हुआ है. एक पे प्लस है तो दूसरे पे माइनस है. Consecutively we have placed opposite charges. Right? So charges are kept like this. Now what we are doing, at the center, we are bringing a charge from infinity here. So we are asked what will be the work done. So अगर तुम लोगों को याद हो, work done का फॉर्मूला हमने मैकेनिक्स में पढ़ा है. F dot ds something like that, right? But यहाँ पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में पढ़ा था. Work done per unit charge is equal to potential difference. ठीक है. So initially when charge is at q naught, here potential at this point is how much. Potential at infinity we take at 0, right? So here potential is 0. Now it is coming from A to B. Potential at B is what, that we need to calculate, and then work done will be equal to what. Work done per unit charge means we are bringing q naught charge, so q naught will be equal to VB minus VA. So VA is already known, that is 0. What will be the value of VB? So potential at B point, that is here, will be because of all charges kept on the hexagon, right? So plus Q की वजह से यहाँ पे potential क्या होगा? So since this is a hexagon, अगर इसके side को आपने D रखा है, तो ये भी D होगा, ये भी D होगा, right? So potential at B because of this first charge will be equal to how much? चलो पुट कर देते हैं सारे वैल्यूज को. So if you are going to put it, first charge की वजह से कितना होगा. KQ by D. Second charge है minus Q, so potential will be negative minus KQ by D. अब तक आप समझ गए होंगे. ये है प्लस KQ, अगेन इसकी वजह से पोटेंशियल KQ by D. This is minus, so minus KQ by D. All distances are same, right? Again this is plus, so plus KQ by D, and again this is minus, so answer will be what? Minus KQ by D. If you are going to add all these things, what you are going to get? यहाँ पे ये आ जाएगा 0. So final potential at point B is also 0. This is also 0, right? यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया. 0. अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ रहा है तो वर्क डन क्या हो जाएगा. Q नॉट इंटू 0 एंड दिस विल गिव यू व्हाट. 0, right? So correct answer will be option A, that is 0. ठीक है. Anyone having any doubt? किसी को कोई डाउट है? If yes, you can let me know. Otherwise, we can move ahead with next question. चलो ठीक है. So let me know the answer of this question. This one you don't need to solve even. अगर तुम्हें concept पता है, then you will be marking it directly. So बताओ क्या आ रहा है.
ओके, रीड द क्वेश्चन, लेट मी नो। कल के क्लास में भी मैंने बताया है। ओके, सहारा, यस, इट लुक्स करेक्ट, यस, इट्स करेक्ट, वेरी गुड। Others, please, everyone come forward and let me know your answer. So far, 4 answers, 3 correct, 1 incorrect. So, गलत नहीं होनी चाहिए। काफी बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, काफी बेसिक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर से क्वेश्चन है एंड दिस इज वेरी मच बेसिक। चलो सभी लोग बताओ क्या आ रहा है। ओके, इट फील्स लाइक आई शुड एंड द पोल बिकॉज इसमें कुछ सॉल्व करना नहीं है तुम्हें। जैसे देखो क्वेश्चन क्या है, द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस इज व्हाट। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? ऐसा सरफेस जिसके, यस श्रुति, जिसके हर पॉइंट पे तुम्हारा पोटेंशियल क्या, सपोज कर लो ये हमारा कंडक्टर है। कंडक्टर में भी मैंने बताया था कि जो भी कंडक्टर होता है उसका सरफेस क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। सो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा। थ्रू आउट द सरफेस पोटेंशियल विल बी सेम। तो अगर हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, यानी कि अगर सरफेस इक्विपोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? क्योंकि अभी अभी मैंने तुम लोगों को एक एक कॉन्सेप्ट बताया था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू डीवी। चलो मैं तुम्हें समझा देती हूँ कैसे होता है, अगर भूल गए हो तो। सो लेट्स से यहाँ पे एक चार्ज है क्यू, एंड उस चार्ज को हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेकर जाना है। ठीक है, डन है। सो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि पोटेंशियल एट ए एंड पोटेंशियल एट बी इज जीरो, सो डीवी इज जीरो, राइट? सो वर्क डन हैज टू बी जीरो, डन है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं होता है, लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे ऐसे है, नॉट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, देन इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट पैरेलल टू द सरफेस होगा। यानी कि क्यू चार्ज पे फोर्स लगेगा, क्यू ई फोर्स लगा स्मॉल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस के लिए, एंड देन देयर विल बी वर्क डन। अगर फोर्स है उसके मोशन के डायरेक्शन में, देन देयर विल बी वर्क डन, डन है। सो वर्क डन जीरो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, एंड इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। तो हमेशा याद रखना, जब भी कंडक्टर हो, कंडक्टर के सरफेस इक्विपोटेंशियल होते हैं, और इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब उसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। यानी कि अगर उस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप ड्रॉ कर रहे हो, तो दैट विल बी परपेंडिकुलर टू इट्स इट्स सरफेस। ठीक है, तो याद रखिए। चलो अब ये क्वेश्चन करो, दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली। आई वुड से यू डोंट नीड टू सॉल्व एनीथिंग, बट यू शुड बी क्लियर ऑफ द कॉन्सेप्ट। तो एक बार करके देखो क्या आता है, आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन। यस, किधर मूव करेगा? पोटेंशियल एनर्जी और स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगाओ, ठीक है। ओके, आई गॉट वन आंसर बट दैट्स नॉट करेक्ट। टू आंसर्स, नो, 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 नो। ओके, इट फील्स लाइक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तुम लोगों का इसका। तो एक काम करती हूँ, मैं पोल को एंड करती हूँ एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। वेल, आई गॉट वन करेक्ट आंसर, लेट्स सी। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देयर इज अ डाइपोल एंड दैट इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। पूछ रहा है किधर मूव करेगा, सो वेयर विल इट मूव। देखो जब भी डाइपोल है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, देयर इज डाइपोल, डाइपोल का डायरेक्शन चेक कर लो ऐसे। अगर डाइपोल है एंड यू हैव kept dipole in external electric field and it has tendency to move,
then it will try to move in a direction, or it will try to get itself into a situation जहां पे वो स्टेबल हो, कोई भी चीज स्टेबल होना चाहता है ना। सो डाइपोल भी इस तरह से मूव करेगा कि वो ऐसे पोजीशन में पहुंच जाए जहां वो स्टेबल हो। अब स्टेबल होने का कॉन्सेप्ट क्या है? सो व्हेन यू आर मोर स्टेबल, व्हेन यू हैव लेस एनर्जी, राइट? because when you have more energy, there is less chance that you will stay at one place, right? You will have more tendency to go randomly here and there. So stable का मतलब less energy. Energy means potential energy we are talking about. That is internal energy. ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप देखो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या था डाइपोल का इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस पी डॉट ई। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसका वैल्यू क्या होगा? माइनस पी कॉस थीटा। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितने एंगल पे हो सकता है? ये थीटा है क्या? थीटा इज एंगल बिटवीन डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो पोटेंशियल एनर्जी को अगर आपको मिनिमम करना है तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा? कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1। एंड अगर यहाँ पे थीटा 0 डिग्री है तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी होगा, यानी कि नेगेटिव। और नेगेटिव जब होता है तो चीजें काफी कम होती है, राइट? सो -10 इज फार फार लेस देन +10। ठीक है? सो माइनस पी विल बी द मिनिमम एनर्जी, 0 से भी कम है ये, है ना? तो थीटा 90 के लिए तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। 0 से भी छोटा कौन है? -PE। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी विल बी एट एंगल थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितने एंगल पे होगा? व्हेन थीटा विल बी 180 डिग्री। क्योंकि व्हेन थीटा इज 180 डिग्री, this value will be minus p cos 180. Cos 180 is -1, so this will become plus p. Done है? तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है प्लस पी, मिनिमम है माइनस पी। स्टेबल होने के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए? मिनिमम। यानी कि डाइपोल शुड मेक एन एंगल थीटा इक्वल टू 0 डिग्री with the electric field. Done है? It means initially dipole ऐसे है, जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच होगा, ऑन होगा, what will happen? This dipole will move by 80 degree to this sense, such that finally ये कितना एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड से बना रहा है? 0 डिग्री। तो ये डाइपोल किधर की तरफ मूव करेगा? राइट की तरफ। ठीक है? एंड क्यों राइट की तरफ मूव कर रहा है? बिकॉज व्हेन इट विल मूव टुवर्ड्स राइट, its potential energy will keep on decreasing until theta will become 0 degree. At that angle, potential energy is the least. ठीक है? सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं कि तुम्हारा डाइपोल कब स्टेबल होगा। डाइपोल विल बी स्टेबल व्हेन पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, when the dipole is unstable, when potential energy is maximum, that is at angle theta equal to 180 degree. ठीक है? दोनों थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू 180 पे डाइपोल तुम्हारा इक्विलिब्रियम में अगर देखा जाए तो, क्योंकि इफ डाइपोल इज केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पे फोर्स क्या लगता है? 0। कल के क्लास में मैंने बताया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, यूनिफॉर्म है, तुमने डाइपोल ऐसे रखा या डाइपोल ऐसे रखा, दोनों पे फोर्स क्या लग रहा है? 0 लग रहा है। टॉर्क भी क्या है? 0। क्योंकि टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है P क्रॉस E। एंड इफ एंगल इज 0 डिग्री, टॉर्क विल बी 0। इफ एंगल इज 180 डिग्री, टॉर्क विल बी 0। सो इन दिस केस टॉर्क इज ऑल्सो 0, फोर्स इज ऑल्सो 0, इक्विलिब्रियम है। लेकिन एक इक्विलिब्रियम स्टेबल है और दूसरा अनस्टेबल है। व्हेन स्टेबल, द वन विच इज मेकिंग एंगल थीटा इक्वल टू 0 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, सो ये वाला स्टेबल है और ये वाला तुम्हारा क्या है? अनस्टेबल। सो ये चीजें याद रखनी, मे बी यूज हो। नाउ लेट्स डू दिस। दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, it gets repeated so many times, so do it. यहाँ से भी दो क्वेश्चन बन सकते हैं। फर्स्ट डू दिस वन, देन आई विल डिस्कस। ठीक है? ओके, आई गॉट वन करेक्ट आंसर।
That is great. Okay. 4 people answered and all have given different answers. That is the peak of diversity, है ना? चलो सही से करो, तुम लोग प्रैक्टिस पहले किए नहीं हो, है ना? ये क्वेश्चन काफी कॉमन है यार, पता होना चाहिए। पल्लवी, नो। राजू, यस। पल्लवी ध्यान से देखो, तुम कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रही हो शायद। Okay. Sahara, there is one mistake. Maybe calculation wise you are doing wrong. Check it once more. ठीक है, I have already given you enough time, 2 minutes, more than that even. So let's understand the question first and then do it. There are two charged spherical conductors of radius r1 and r2. So one is having radius r1, another is having radius r2. Okay, there's no break obviously, and they're connected by a wire. So through conducting wire they are connected. Okay, then the ratio of surface charge density of a sphere sigma 1 and sigma 2 is what? So just look at this diagram. This is sphere 1, this is sphere 2. They are connected by a conducting wire. What does it mean? जैसे सपोज कर लो इस पे 10 कूलम का चार्ज है, ठीक है। एक दूसरा स्फीयर है जिसपे 5 कूलम का चार्ज है। लेट्स से दोनों का पोटेंशियल, दोनों का रेडियस क्या है, सेम। सो अगर ऐसा है तो तुम फर्स्ट डायग्राम में देखो। फर्स्ट डायग्राम में फर्स्ट स्फीयर का पोटेंशियल कितना होगा, के इंटू 10/r। सेकेंड का कितना होगा, के इंटू 5/r। सो क्लियरली हमें दिख रहा है कि वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। पोटेंशियल किसका बड़ा है, ए का बड़ा है बी से। अब अगर ऐसा तुम करते हो कि ए को बी से कनेक्ट कर दिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होता है, चार्ज का फ्लो होता है। सो जिसका पोटेंशियल ज्यादा है उसका चार्ज फ्लो करेगा टुवर्ड्स द वन विच इज हैविंग less potential, right? So here charge will flow from A to B, and until what time it will flow? Until the time when their charge will become what? Here equal, or until the time when their potential will become equal. Charge equal कहने से बेहतर है हम क्या बोले, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज फ्लो हो रहा है। चार्ज फ्लो बंद कब होगा, जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा। और अगर तुमने दो दो कंडक्टर्स को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया है तो उनका पोटेंशियल सेम होगा सर्टेन टाइम के बाद, है ना, एंड दे विल बिकम इक्विपोटेंशियल। ठीक है, सो यहाँ पे भी सेम चीजें होंगी। लेट्स से इस पे चार्ज Q1 है एंड लेट्स से यहाँ पे चार्ज Q2 है। इफ दे आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर इट मींस दे आर शेयरिंग सेम पोटेंशियल। कहने का मतलब है कि के Q1/R1 इज इक्वल टू के Q2/R2। सो इस सिचुएशन में वी कैन से Q1/Q2 इज इक्वल टू R1/R2। सो अगर हमसे चार्ज का रेशियो पूछा जाता तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि दैट इज इक्वल टू R1/R2। सो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, है ना, क्योंकि Q1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1, Q2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2। हमसे पूछा गया सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो फर्स्ट सरफेस पे चार्ज डेंसिटी क्या होगा, लेट्स से दिस इज सिग्मा 1। सिग्मा 1 विल बी Q1/4πr1 का स्क्वायर एंड सिग्मा 2 विल बी Q2/4πr2 का स्क्वायर। डिवाइड कर लो आप दोनों को, 4π कैंसिल हो जाएगा। तो सिग्मा 1/सिग्मा 2 इज हाउ मच, Q1/Q2 इंटू R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर। ठीक है, और Q1/Q2 अभी अभी हमें पता है किसके बराबर है, R1/R2। सो R1/R2 लिखा इंटू R2 स्क्वायर बाय R1 का स्क्वायर।
If you are going to solve it, what you will get? क्या दिख रहा है बताओ? कितना दिख रहा है ये? एक R1 कैंसिल होगा, एक R2 कैंसिल होगा, R2 by R1. So always remember when you are asked such sort of question, if there are two conductors connected through wire, and if they are spherical conductors, one has a radius R1, another has a radius R2, then what will happen? Their charges will be directly proportional to radius. ठीक है? And their surface charge density will be inversely proportional to radius. So this is the question. Correct answer will be which one? B. ठीक है? चलो. Now let's do some question from gravitation. Simply this is also from the formula. You can see. So take your time, do it. First, can you write your name properly in your account so that I can pronounce your name? There is one student who has sent me some doubts. So, I mean, how to take your name? Will you please let me know what's your name? Uh, no, all chapters are there. All concepts are there. Which thing you're finding missing? Yes, Deepu, you're right. कौन सा चैप्टर मिसिंग लग रहा है ये बताओ मुझे. कौन से टॉपिक मिसिंग लग रहे हैं? Let me know. You were there in yesterday's class? बता दो मुझे so that I can let you know. ठीक है? Okay, okay, great. Up to my knowledge, all are there. ठीक है? Okay, I didn't launch the poll. कर देती हूँ, अभी कर देती हूँ. ठीक है? Now you can put in your answers. Escape velocity का फॉर्मूला सबको पता है? Okay, one correct answer. Escape velocity का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर 2GR. दिस इज फॉर द अर्थ. यानी कि रैंडम फॉर्मूला अगर लिखो, G मतलब GM/R², where R is the radius of that planet, M is the mass of planet into R. So इस टर्म में अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे? 2GM/R. This is the general formula, right? Yes, I'm expecting more answers. Only one I got. Two answers. That's great. अदर्स प्लीज. देखो फॉर्मूला मैंने रिवाइज करवाया ना, तुम लोगों को पता होना चाहिए यार. क्या कर रहे हो तुम लोग? यू पीपल आर नॉट टेकिंग थिंग्स सीरियसली, आई वुड से. ऐसे कैसे काम चलेगा? तुम लोग सिंपल फॉर्मूला के क्वेश्चंस को पुट नहीं कर पा रहे हो. दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग. आई मीन एट दिस स्टेज आई शुड नॉट बी स्कोल्डिंग यू फर्स्ट थिंग, बट इट फील्स लाइक यू पीपल आर नॉट टेकिंग एनीथिंग सीरियसली. ऐसे तो नहीं चलेगा. पॉजिटिव टेंशन यू नीड टू टेक. सो मच टेंशन इज नेगेटिव, बट पॉजिटिव टेंशन इज रिक्वायर्ड. ठीक है? चलो. ये तो डिसअपॉइंटिंग है ना. तुम लोगों के पास फॉर्मूला है, थिंग्स है, यू आर नॉट पुटिंग इट. दिस इज टू बैड. 2 into G. अब देखो, escape वेलोसिटी अर्थ के सरफेस के लिए v है. सो 2 into G इज द कांस्टेंट. m इज मास ऑफ अर्थ, रेडियस r इज रेडियस ऑफ अर्थ. अगर ऐसा पुट करते हो तो वैल्यू v आ रहा है. ठीक है? नाउ देर इज अनदर प्लैनेट विच हैज अ मास 9 times दैट ऑफ अर्थ. सो मास को क्या लिखोगे? 9 me. एंड रेडियस इज हाउ मच? 16 times. सो रेडियस को क्या लिखोगे? 16 re. तो इफ दिस इज द थिंग, ये कितना आएगा? 3/4 रूट अंडर 2GME/re. एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू हाउ मच? V. सो आंसर विल बी हाउ मच? 3/4 V. सो करेक्ट आंसर विल बी योर C. कुछ नहीं करना था, फॉर्मूला ही तो पुट करना था तुम्हें. नाउ डू दिस क्वेश्चन. All our previous year questions. Do it, please.
First, read the question carefully. Also, see the diagram carefully. After that, you just need to apply the formula. फॉर्मूला याद है ना सबको? वेट क्या होता है? वेट होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एंड हियर बोथ द पॉइंट्स ए एंड बी आर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ. सो फॉर्मूला आप क्या लिखने वाले हो? जी डैश का जी एम बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, राइट? इफ हाइट इज फार फार लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ, देन फॉर्मूला क्या था हमारा? जी एम बाई आर ई का स्क्वायर 1 minus 2h by r. This was the formula, right? But ये केस है नहीं, क्योंकि this height is at distance 2 into re, which is not less. This is also re by 2. So not insignificant differences there, right? So we need to put in things carefully. I mean, you should have idea of which formula to use where. Done it? Let me check any answers. Okay. 2 answers only are received. One is correct, one is incorrect. Do the calculation properly, please. And more number of people should answer. Please come forward. Do it. I've already given you 2 minutes. Chalo, theek hai. End karti hu. So what is thing here? What is the question? An object of mass 100 kg falls from point A to B. The change in its weight. So weight at A will be equal to how much? mg dash at A. And what will be weight at B? Weight at B will be mgb dash, right? So simply we have to calculate GA dash and GB dash, and then we have to calculate the difference of mga dash minus mga dash and mgb dash का difference निकालना है. This is what we are required to do, right? So GA dash कितना होगा बताओ? क्या लिखोगे? gm by आर ई प्लस एच. कितने हाइट पे है? अर्थ से कितने हाइट पे है ए पॉइंट? इट इज एट ए हाइट ऑफ 2 आर ई. सो यहाँ पे आप 2 आर ई लिखो का स्क्वायर. So if you are going to do this, this will give you gm by re ka square into 1 by 9. And you already know gm by re ka square is equal to small g, that is here 10 meter per second square. So this is g by 9. ठीक है? Now if you calculate what gb dash, अगर आप कैलकुलेट करो तो क्या लिखोगे? gm by again re plus h. कितने हाइट पे है b पॉइंट? इतने हाइट पे. ये हाइट कितना है? सो 2 re minus re by 2, that is 3 re by 2. तो यहाँ पे आप लिखो 3 re by 2 का स्क्वायर. अगर आप इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा बताओ? gm by re का स्क्वायर इनटू 4 बाई सॉरी 4 होगा, हाँ 4 बाई 9 है ना. एंड यस, दिस इनटू व्हाट? दिस इनटू नथिंग. सो दिस इज इक्वल टू 4 बाई 9 जी. अब आप वेट का डिफरेंस निकाल लो. सो वेट का डिफरेंस क्या होगा? एम को आप कॉमन ले लो, जी ए डैश माइनस जी बी डैश कर दो. जी बाई 9 माइनस 4 जी बाई 9. ठीक है? सो दिस विल गिव यू हाउ मच? ओके, इसके मॉड्यूलस को निकाल लेते हैं. कैलकुलेशन सही किया है ना मैंने? नहीं, कैलकुलेशन गलत किया है. तुम लोग कुछ मार्क नहीं करते हो. हाँ, यहाँ पे मैंने गलत ऐड कर दिया, तुम लोगों ने कुछ बोला भी नहीं. कि इतने चुप क्यों हो ये बताओ पहले. यार पार्टिसिपेट करो, कीप योर एनर्जी हाई प्लीज. सो यहाँ पे आर ई प्लस 3 re by 2 है. दिस विल बिकम जी एम बाई 5 re by 2 का स्क्वायर, right? So this will give you how much? This will give you gm by re ka square into 4 by 25. So this is equal to 4 by 25 g. ठीक है? This is equal to how much? 4 by 25 g. अब आप कैलकुलेट करके निकालो. डन है? अब आप कैलकुलेट करो. सो m
g/9, not this one, -4g/25. अब इसको सॉल्व कर लो, m इंटू 25 - 4, दैट इज 21g/25 इंटू 9, कैलकुलेटेड। ठीक है, m का वैल्यू 100 रखो, g का वैल्यू 10 रखो, यू विल गेट 49 न्यूटन एज द आंसर। सो करेक्ट आंसर विल बी विच वन? ए। ठीक है, चलो, एवरीवन गॉट द आंसर या किसी को कैलकुलेशन में मिस्टेक, सॉरी कैलकुलेशन में दिक्कत लग रही है, बताओ। चलो, यू कैन लेट मी नो। इट्स डन। ठीक है, ठीक है, देखो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। नाउ लेट्स डू दिस लास्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। चलो, डू इट, आई एम हियर ओनली, लेट मी लॉन्च द पोल फॉर यू। सो सही से करना, ऐसे क्वेश्चंस काफी आते हैं। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज वेरी मच कॉमन। यस। ओके, आई गॉट 3 आंसर। Pallavi, there is some mistake. Check it once. ठीक है, चलो, I will show you how to do such questions. ठीक है, चलो। So, what is the question? The minimum energy required to launch a satellite of mass small m from the surface of Earth. So, there is satellite on the surface of Earth. Its mass is given small m. Mass of Earth is given capital M. Its radius is given capital R. In a circular orbit at an altitude 2r from the surface of Earth. So surface of Earth से कितने altitude पे ले जाना है हमें सैटेलाइट को? 2r altitude पे. So overall from the center of Earth it is at a distance of 3r. डन है, हमें सैटेलाइट को ऐसे ऐसे रखना है। सो अर्थ के अराउंड सैटेलाइट जाएगा एट एन एल्टीट्यूड 2r। डन है, हाउ वी विल लॉन्च इट? सो लॉन्च करने का मतलब ये होता है कि you have a satellite kept on the surface of Earth, it has certain energy, right? When it will be here in the orbit of radius 3r, then what will happen? Pallavi, again you need to reach it. अब देखो यहाँ पे जब वो रेडियस 3r में है, यहाँ पे उसकी एनर्जी कुछ और होगी। लेट्स से हियर एनर्जी इज EA and when it was on the surface of Earth, here energy is EI. Done it? So difference of the energy is the amount of energy we need to give to the satellite in order to launch it to this orbit. ठीक है, सो EI का वैल्यू कितना होगा बताओ? EI का वैल्यू हो जाएगा -GMM/R, है ना? It is kept on the surface of Earth. It's not going round and round in a circle. It has no kinetic energy, only potential energy. अब आप देखो फाइनल एनर्जी कितनी होगी। अगर तुम लोगों को याद हो तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अगर आर
रेडियस में है तो -gmm/r। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना था, gmm/2r, and this is potential energy, this is kinetic energy. If you are going to add these two, you will get total energy as -gmm/2r. So when it is on the surface of earth, there is no kinetic, only potential, इसलिए मैंने total initial energy को लिखा -gmm/r. total final energy will have both potential and kinetic. So फॉर्मूला ये लेकर जाओ आप, ठीक है। अब आप यहाँ पे ऐड करो, कितना आएगा बताओ, -gmm/2। व्हाट इज द रेडियस हियर, रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट, इसी ऑर्बिट का रेडियस लिखोगे ना आंसर में, इसको स्मॉल आर में लिखती हूँ यहाँ, ठीक है। सो हाउ मच इज द रेडियस, दैट इज 3r। सो यहाँ पे आप लिखोगे 3r, सो -gmm/6r। now what is the difference of energy, definitely final is greater than initial because they are with negative sign. So EF minus E initial अगर आप करते हो तो -gmm/6r plus gmm/r होगा, ठीक है। एंड इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट, यू विल गेट एस 5gmm/6r. So correct option will be A. You just needed to be conceptually sound for this question, and then you should have a formula. यहाँ पे कोई काइनेटिक पोटेंशियल को अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, टोटल एनर्जी फॉर्मूला यूज करो। बट यहाँ पे टोटल एनर्जी नहीं, फॉर्मूला नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल है, काइनेटिक इज नॉट देयर, सो यू हैव टू बी केयरफुल, ठीक है। चलो, so these were all the questions from which portion, electrostatics and gravitation. अब आज की क्लास में we have 15 minutes, so what we will be doing, करंट इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कर ले, ठीक है। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, किसी को और कोई दिक्कत है इलेक्ट्रोस्टैट या ग्रेविटेशन से? इफ यस, यू कैन लेट मी नो। एनीवन? Any problem if anybody is facing, you can let me know now. If not, then also you can let me know. ठीक है, देखो एवरीवन ओके, चलो ठीक है। आई विल जस्ट रीशेयर अनदर स्लाइड, ठीक है, जस्ट गिव मी सम टाइम। सो आने वाले क्लास में हम लोग क्या रिवाइज करने वाले हैं, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर के क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे, ठीक है। कल के क्लास में, कल की क्लास में हम प्योरली क्वेश्चन करेंगे, सो आई विल इंक्लूड मोर क्वेश्चंस सो दैट वी कैन हैव मोर प्रैक्टिस। अब देखो इसमें क्या क्या पढ़ना है। पहले तो करंट के फॉर्मूला से भी क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली, सो करंट का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, ओम्स लॉ क्या है पता होना चाहिए, मोबिलिटी का फॉर्मूला, रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है, पावर क्या है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, व्हीटस्टोन ब्रिज, एंड ऑल्सो टू सम एक्सटेंट मीटर ब्रिज, ठीक है। सो लेट्स हैव अ लुक ओवर दिस थिंग्स, क्या क्या चीजें हमें दिमाग में रखनी है। चलो, सो करंट का फॉर्मूला, सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या है करंट का, दिस इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, सिंपल। उसके बाद माइक्रोस्कोपिक टर्म पे हमने फॉर्मूला पढ़ा है, करंट इज ए एनी वीबी, यानी कि अगर हमें कंडक्टर दिया हुआ है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, सपोज करंट ऐसे एंटर किया इस क्रॉस सेक्शन को, डन है, एंड since this is a conductor, it will have free charges, so number of free charges per unit volume is just small n. E is value of charge on one particular unit, that is equal to electron का charge, and Vd is your drift velocity, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीजें जो मार्क करनी है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है ना, हमेशा याद रखना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया है, ये एक एवरेज वेलोसिटी है। कभी कभी पूछता है कि क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है, तो नहीं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। चलो, ये तो क्लियर हुआ। सो करंट के फॉर्मूला को हम और कैसे लिख सकते हैं, ए एनी वी डी।
उसके बाद करंट को ओम्स लॉ से भी लिख सकते हैं कि अगर हमारे दो कंडक्टर के आर्म्स के क्रॉस अगर डिफरेंट सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया, लेट्स से डेल्टा वी, जो मोस्ट केसेस में बैटरी होता है, जिसका डिफरेंस ऑलरेडी 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 1 वोल्ट, वट एवर वोल्ट इज ऑलरेडी रिटन, देन वी पुट द वैल्यू ऑफ वोल्ट एंड देन पुट इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर एंड देन वी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो ओम्स लॉ को भी यूज कर सकते हैं। अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को थोड़ा और देखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है। तो इसका फॉर्मूला है ई ई टाउ बाई एम। इसका क्या मतलब है कि अगर ये कंडक्टर है ना, मैं कॉन्सेप्ट पे इसलिए जा रही हूँ क्योंकि असर्शन रीजन आता है तुम लोगों को, तो इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो कंडक्टर है, इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल तुमने नहीं दिया, तो इसके जो भी फ्री चार्जेस है ना वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो रैंडम मोशन हो रहा है। जैसे ही तुमने इसको पोटेंशियल दे दिया, पोटेंशियल डिफरेंस, अगर तुम्हारा ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा ये बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, है ना। सो इस डायरेक्शन में जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड थ्री चार्जेस को फील होगा, वो इस डायरेक्शन में चलने लगेंगे। सो दे स्टार्ट ड्रिफ्टिंग, दे स्टार्ट मूविंग विथ सर्टेन एवरेज वेलोसिटी, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। एंड इसका फॉर्मूला क्या है, ई ई टाउ बाई एम, यानी कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड दैट यू हैव गिवन, टाउ। And tau is what? This is time of relaxation. This is what? This is time of relaxation. तो देखो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन का मतलब क्या है कि जब कंटेनर में कंडक्टर के अंदर जो फ्री चार्जेस थे रैंडम मूव कर रहे थे, देवर कोलाइडिंग, है ना। अभी ये पैटर्न में मूव कर रहे हैं, एक लाइन पे मूव कर रहे हैं, देन ऑल्सो देयर इज चांस इट विल कोलाइड, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी वीडी है। कोई भी इंस्टेंट पे अगर वेलोसिटी चेक करे तो वीडी से कम ज्यादा हो सकता है, सो देयर विल बी कोलिजन। डन है। सपोज कर लो यहाँ पे ये पार्टिकल कोलाइड किया, उसके बाद ये आराम से चला थोड़ी देर और फिर कोलाइड किया। सो फॉर वॉट एवर टाइम इंटरवल इट इज मूविंग विथ ईज, इट इज मूविंग विदाउट कोलाइडिंग, दैट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड व्हाट, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। एंड इन थर्मोडायनेमिक्स also I gave you the concept of what is that called, mean free path. So that is basically the distance for which it traveled with each. ठीक है, सो दिस इज टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। अब देखो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन से भी क्वेश्चन आता है, समटाइम्स यू विल बी आस्क्ड इट डिपेंड्स ऑन व्हाट थिंग्स। सो इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये किस चीज पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इफ द टेम्परेचर ऑफ सैंपल इज हायर, अगर सैंपल का टेम्परेचर ज्यादा है, देन देर इज दे विल कोलाइड मोर फ्रिक्वेंटली, यानी कि रिलैक्सेशन विल डिक्रीज। सो टाउ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एज यू आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टाउ इज डिक्रीजिंग। ठीक है। उसके बाद एक टर्म है विच इज कॉल्ड मोबिलिटी। सो व्हाट इज दिस मोबिलिटी, दैट इज इंडिकेटेड बाय म्यू इक्वल टू वीडी बाई ई। ठीक है, सो वीडी इज व्हाट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोबिलिटी। So mobility basically defines how mobile is the free charges inside conductor, nothing else. You simply need to remember the formula. So that is drift velocity by electric field. याद रखना। ठीक है। उसके बाद है तुम्हारा ओम्स लॉ। ठीक है। ओम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा, ओम्स लॉ में हमने पढ़ा V इज, सॉरी, करंट इज, या फिर V को कह दो, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, potential difference is directly, or current is directly proportional to the potential difference. This proportionality constant is written as resistance. Sorry, resistance. Yes, R. And R will be function of material. Different material का different resistance होता है. R will depend on temperature. ठीक है. R will depend on geometry. है ना. We know if R का formula हमने क्या बाद में पढ़ा था, rho L by A. So it depends on कि करंट जिस क्रॉस सेक्शन को एंटर कर रहा है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, या फिर करंट जिस कंडक्टर को एंटर कर रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर, दैट विल आल्सो डिफाइन रेजिस्टेंस। सो बेसिकली रेजिस्टेंस विल डिपेंड ऑन द ज्योमेट्री, ऑन द मटेरियल एंड ऑन द टेम्परेचर। ठीक है, सो दिस इज अनदर थिंग, वी विल कम बैक टू दिस स्लाइड अगेन, बट बिफोर, उसके पहले हम रेजिस्टेंस को देख लेते हैं। सो रेजिस्टेंस का अभी अभी फॉर्मूला हमने क्या लिखा, रो एल बाई ए। अब इसमें कॉमन कंफ्यूजन ये कभी कभी हो जाता है, ध्यान से तुम लोग देखना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सा लेना है, जैसे हियर इफ आई एम टेकिंग दिस थिंग, दिस सिलेंड्रिकल कंडक्टर, लेट्स से करंट इज एंटरिंग लाइक दिस,
Then area of cross section, you won't take this one. You will take area of cross section here as equal to curved surface area. ठीक है. So अगर करंट जिस क्रॉस सेक्शन को एंटर कर रहा है उसी का एरिया लेना होगा. ठीक है. So here area will become what? Here area will become 2 pi r. अगर बहुत ही गुड क्वेश्चन आएगा तो ऐसा आ सकता है. Now what will be the length here? इसको मैं L नॉट लिखती हूँ. What will be the length here? So length is always the distance up to which current is traveling. So here it is traveling up to this distance. So this will be equal to diameter. So here length is equal to diameter. ठीक है. अगर करंट ऐसे एंटर करता तो क्या होता? इसके लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वुड बिकम पाई आर स्क्वायर एंड length will be equal to what? This length, and this length I have taken as L naught. So L naught. Then this is how we calculate. Now there is another thing, VI characteristic of ohmic and non-ohmic conductor. V versus I का अगर आप कर्व बनाओगे तो हमारा कर्व कैसा दिखता है? दिस इज स्ट्रेट लाइन. ठीक है. IV कर्व कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन. ओमिक कंडक्टर के लिए, यानी कि कंडक्टर विच इज फॉलोइंग ओम्स लॉ. देयर आर सर्टेन कंडक्टर विच डजंट फॉलो ओम्स लॉ. सेमीकंडक्टर में पढ़ा होगा, है ना. सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में जब करंट फ्लो होता है, वी हैव ड्रॉन IV कैरेक्टरिस्टिक लाइक दिस, we have drawn IV characteristic like this, right? So here IV characteristic is not linear. It's getting somewhat curved. It is straight line, then swooping up. Then so यहाँ पे this is non-ohmic conductor. There are certain ohmic conductors. ठीक है. एक चीज है which we didn't discuss, that is your what is that? Current density. ठीक है. So current density को आप कैसे लिखते हो? करंट डेंसिटी J से इंडिकेट करते हैं, एंड दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है. सो J कैप इज इक्वल टू हाउ मच current flowing per unit area of cross section. So since this is a vector quantity, what will be the direction of current vector? हमेशा देखना कौन से क्रॉस सेक्शन को करंट एंटर किया. सपोज इन दिस क्रॉस सेक्शन करंट इज एंटरिंग, देन direction of current density will be perpendicular to this area. ठीक है. जिस भी क्रॉस सेक्शन को एंटर किया है उस क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो नॉर्मल का डायरेक्शन होगा, दैट विल बी टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी. ठीक है. चलो, दिस इज वन थिंग. उसके बाद ओम्स लॉ को हमने एक ऐसे लिखा. ओम्स लॉ को कैसे लिखा? V इक्वल टू आई आर लिखा. ठीक है. जिस तरह से हमने करंट को माइक्रोस्कोपिक टर्म में लिखा था, I इज इक्वल टू ANEVD, उसी तरह से ओम्स लॉ को भी माइक्रोस्कोपिक टर्म में हम लिखते हैं, एंड इन दैट केस वी राइट J इज इक्वल टू सिग्मा E. दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आए. ठीक है. काफी बार आता है. सो J इज करंट डेंसिटी, सिग्मा इज कंडक्टिविटी, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. सिग्मा क्या होता है तुम्हारा? NE स्क्वायर टाउ बाई M. ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी तुम्हें याद रखना है. सिग्मा का वैल्यू NE स्क्वायर टाउ बाई M. सिग्मा इज और कंडक्टिविटी. सो सिग्मा इज बेसिकली 1/ρ. डन. सो ओम्स लॉ को दो फॉर्मूला याद रखना है. V इक्वल टू आई आर, J इक्वल टू सिग्मा E. सिग्मा इज कंडक्टिविटी, दैट इज 1 बाई रेजिस्टिविटी. सिग्मा कैन बी रिटन एज NE स्क्वायर टाउ बाई M. ठीक है. सो डन है. एनीवन हैविंग एनी डाउट सो फार? नहीं. चलो ठीक है. इफ नॉट देन इट्स फाइन. वी आर कैरेक्टरिस्टिक हमने देख लिया. इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर. पावर को हम कैसे लिखते हैं? पावर को हम लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इनटू करंट फ्लोइंग. इसी को हम V को आई आर लिख सकते हैं. सो देन इट कैन बिकम I स्क्वायर आर. एनर्जी कंज्यूम्ड अगर लिखना होगा तो I स्क्वायर आर टी. अगर टी टाइम में कितना एनर्जी रजिस्टर कंज्यूम कर रहा है, देन यू कैन राइट इट लाइक दिस. सो दिस इज हाउ वी डिफाइन इट. टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है? सो लेट्स से एट टेम्परेचर T0 रेजिस्टेंस इज R0, and if at any temperature T we have to define resistance, then RT is R0 1 plus alpha delta T. ठीक है. डेल्टा T क्या हो जाएगा तुम्हारा? T minus T0. अल्फा इज अ कांस्टेंट. ठीक है. अगेन दैट विल बी प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल. नाउ इंटरनल रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF ऑफ अ सेल. सेल हमने देखा है ऐसा, है ना. इस सेल में क्या होता है? इट हैज सर्टेन EMF E, इट हैज सर्टेन इंटरनल रेजिस्टेंस R,
Done. When we talk about EMF of the cell, we purely talk about this. When we talk about potential difference across the battery, then we talk about E minus IR. So if current is flowing through this section, let's say this is a complete circuit, then current will flow. And if current is flowing, then potential difference across the battery is E minus IR. If no current is flowing, then potential difference across the battery is equal to E, which is called EMF. So EMF E होता है और potential difference cell के cross E minus IR होता है. डेफिनेटली जब I 0 होगा तो B भी E हो जाएगा. ठीक है, सो दिस डिफरेंस यू शुड अंडरस्टैंड. अब देखो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल. पैरेलल का तो सिंपल तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2. I mean E1 by R equivalent. E equivalent by R equivalent is this, and R equivalent will be equal to this. So this is simple formula. ये कैसा केस होगा? When cells are connected in parallel. I mean like this. Let's say there are cells connected like this. ठीक है, सो अगर हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है R1 R2 R3 R4, then 1 by R equivalent will become this. So this whole cell you can replace by single cell, which will have R equivalent equal to this one, this much. ठीक है, and E equivalent you can calculate from this equation. Then first you need to calculate R equivalent, put the value of R equivalent here, then you calculate E equivalent by using this formula. Now if you अगर अगर तुम्हें सेल्स इन पैरेलल सीरीज देखना है तो वहां पे हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना है. चलो इस टॉपिक को हम कल करेंगे, बट इसी स्लाइड सेक्शन में मैं वो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ. ठीक है, सो लेट्स से वी हैव दिस मेनी सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज. ठीक है, लेट्स से आई एम सेइंग these all have same EMF. So let's say all has EMF E naught and all have internal resistance R. ठीक है, so R equivalent will be equal to how much? R plus dot dot up to whatever number it is. So R equivalent will become this. I mean, I'm telling, if you are replacing this combination of cells with one each cell, then that cell will have R equivalent equal to R1 plus R2 plus so on. What will be the E equivalent? So for calculating E equivalent, what you have to check is you have to check for the current direction. जैसे देखो पहला सेल करंट इट विल ट्राई टू सेंड करंट इन दिस सेंस, दूसरा विल ट्राई टू सेंड करंट इन दिस सेंस, थर्ड इन दिस सेंस, फोर्थ इस सेंस में करंट सेंड कर रहा है, फिफ्थ भी इधर सेंड कर रहा है और सिक्स्थ इधर कर रहा है. अब देखो कितने नंबर ऑफ सेल इस डायरेक्शन में करंट सेल कर रहे हैं राइट डायरेक्शन में. तो एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ एंड चार, सो फोर. फोर ई नॉट को आप एक डायरेक्शन में ले लो. ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे ये एक ऑपोजिट डायरेक्शन है. ठीक है, और ये तुम्हारा एक ऑपोजिट डायरेक्शन. अब इसको टू ई नॉट ले लो, दोनों को माइनस कर. सो हाउ मच इज द नंबर? नंबर इज योर टू ई नॉट. सो इसका ईएमएफ इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? टू ई नॉट. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू सॉल्व इट. अगर जनरल फॉर्मूला तुम्हें लिखना है तो पहले नंबर ऑफ सेल्स लिख लो. सो लेट्स से नंबर ऑफ सेल्स आर एन एंड चेक कि कितने नंबर ऑफ सेल्स ऑपोजिटली डायरेक्टेड है. लेट्स से m नंबर ऑफ सेल्स आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड, सो यहाँ पे 2m लिखो. ठीक है, कितने नंबर ऑफ सेल है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6, सो ये 6 हो जाएगा माइनस 2. कितने नंबर ऑफ सेल्स ऑपोजिटली डायरेक्टेड है? 2, सो यहाँ पे 2 इंटू 2, सो आंसर क्या हो गया? 2, यानी कि 2 इंटू ई नॉट. ठीक है, if they are having same EMF then we can easily use this formula n minus 2m E naught. ठीक है, if not just check with the current direction, subtract it properly, you will get the answer. ठीक है, so let's now do the remaining portion in tomorrow's class. I hope everything is clear. So do solve more number of questions from current also.
Hello everyone, good evening. How is everybody? कैसे हो सभी लोग? Let's just wait for some 1 or more 2 minutes for others to join. After that, we will be starting with the class. In the meantime, किसी का कोई doubt हो, anything you want to convey, you can do. ठीक है? Let me know if you need any help or anything of that sort. Then very good evening. Larson, very good evening. Good evening, everyone. Good evening. Stay Hari Kanhaiya. Good evening, everyone. I feel like now we should start, है ना? Without waiting any further. Just give me one. Hello, everyone, and very good evening. I hope everyone is fine and good. So today in the class, we are going to move further in electrostatics. कल के class में we did up to electric field, right? We have drawn some structure or something of that sort, right? So आज की class में basically we will read more about electric field and also we will do some questions. ठीक है? चलो. So, okay, dielectric constant किसी का question है. This I will be dealing with after some 4 or 5 classes. ठीक है? जब मैं कैपेसिटर पढ़ाऊंगी या फिर when I will deal with dielectric, then I will tell you what is this dielectric constant. But it's related to permittivity and all. For now, I can tell you this much. ठीक है? उसके बाद जब भी सेशन स्टार्ट होगा, आई मीन कैपेसिटर का, देन पता चल जाएगा क्या होता है. सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. चलो. कल के क्लास में हमने बेसिकली क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्लोर किया था. कोई भी चार्ज होता है उसके सराउंडिंग में जो उसका इन्फ्लुएंस है उसको दिखाने के लिए वी ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस.
अगर पॉजिटिव चार्ज है, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, field lines will look this straight like this, and they will start from positive charge and end somewhere on infinity. ठीक है, this is the thing for positive charge. ठीक है, अगर हमारे पास नेगेटिव आइसोलेटेड चार्ज है तब क्या हो रहा था, यहाँ पे field lines आकर एंटर करेगा. This was the thing, right? And if there are two charges in the surrounding, then एक plus ले लो, दूसरा minus ले लो. So some field lines coming out from positive charge will end on negative charge. Some will go like this, others will go like this. But there will be curved field lines, more curved field lines. Why? Because positive charge is interacting with negative charge. ठीक है? व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड, ये क्या है? I mean, physical board you're talking about, Kanhaiya? Okay, no, it's not possible as of now. This is the system actually. Sorry. ठीक है? Okay. So this is this thing. Similarly, if there is positive charge, another is also positive charge, then there will be repulsion, and so field lines will curve away from each other. ठीक है? ये कैसे curve करेंगे? Away from each other. So field lines will look like this. इस तरह से कुछ बना सकते हैं. डन है. उसके बाद हमने फील्ड लाइंस का कैरेक्टरिस्टिक देखा था. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट फॉर ऑल चार्जेस, एक्सटेंड्स अप टू इंफिनिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप, क्योंकि क्लोज लूप बनाने का मतलब ऐसा होगा कि फील्ड लाइन इज कमिंग फ्रॉम द सेम चार्ज एंड ऑल्सो एंडिंग एट द सेम चार्ज. दिस इज नॉट पॉसिबल. Field line cannot intersect each other, because if they are intersecting, then at a certain point direction of electric field which is tangent on the field will be 2. There will be two tangents, and at a point इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन नहीं हो सकता, एक ही हो सकता है ना. जैसा कि कल भी मैंने बताया था, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, सपोज एक फील्ड लाइन मैं ऐसे बना रही हूँ, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, टेंजेंट टू दिस पॉइंट. इस पॉइंट पे क्या होगा, टेंजेंट टू दिस पॉइंट. ठीक है, प्रॉपरली टेंजेंट बनाना. If there is another field line which is intersecting like this, then at this point there can be one more tangent, which is not possible, क्योंकि एक ही पॉइंट पे फील्ड का दो डायरेक्शन दिख रहा है, which is not true. So this cannot be the case. Then थर्ड ये है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. कल भी मैंने बताया था कि अगर प्लस क्यू के लिए फील्ड लाइंस आप बना रहे हो, और इफ यू आर लेटिंग 4 फील्ड लाइंस कम आउट ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज, then for plus 2q charge you must draw such 8 lines. So more the value of charge, more there will be field lines. And if there are more field lines, it means what? इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल मतलब है field lines will be more closer to each other. ठीक है, वो field lines क्या होंगे, आपस में ज्यादा close होंगे, because there are more field lines. ठीक है. Again, the last thing that you can read is, wherever field line is more crowded, their electric field is more strong. ठीक है, that I will explain better later also. So let's first do one question. तो ये क्वेश्चन है, आप लोग टाइम लो करो, and let me know your option in the poll section. Also you can let me know your answer in the chat section. ठीक है. Hello. Okay. I have unmuted everybody. So if anyone needs to speak, you can raise your hand. I will unmute. Okay. Okay. नवोदय, नंदू. ठीक है, करेक्ट. जेनबी, हावेरी, यस. देखो, वन इज देयर विथ नेम एचपी. प्लीज चेंज योर अकाउंट नेम टू योर रियल नेम प्लीज. तनुजा. ठीक है, वेरी गुड. From this time onward, I won't be calling out such accounts. ठीक है, even if you have doubt, I won't read that.
So that is going to be for sure. इसलिए if you want to get heard, please change your account name to your actual name or to the name of your school if you are in a school then. ठीक है. So many of you answered. Let's check in the poll section. 15 of you has answered. 9 answers are correct. Let us check now. So यहाँ से क्या दिख रहा है? What is the question? Field lines are drawn here in the question. One charge is Q1, another is Q2. What are the signs of two charges? दो charges का sign क्या है? Are they positive or negative? So Q1 के लिए अगर आप देखो तो field line is ending on this point, on this charge. And field line end किसके लिए करता है? For negative charge. For negative charge, field lines will end on it. So here it is ending. It means Q1 is negative. Here also it is ending for Q2. Then this is also negative. So both are negative. ठीक है? Clear है? चलो. Now we will learn one basic thing कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैसे निकालें. ठीक है? जैसे आप लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करने के लिए पढ़ा. डन है? Now we can draw electric field lines, but what is the magnitude of electric field lines? So let's deal with that thing. Suppose कर लो there is a charge Q here, and at any distance R we have to calculate electric field value at some point P, let's say. So electric field at point P is then written as KQ by R square. This is the value of electric field. Also, you can define electric field as force acting per unit charge. This electric field can also be defined as this. जैसे कि यहाँ पे अगर आप small q charge रखते हो, then what will be the force acting? So force acting here will be KQ by R का square. And if you calculate force per unit charge here acting on small q, then that will be equal to KQ by R cube. So for any point charge Q, if you have to calculate electric field at any distance R, then that is equal to KQ by R square. ठीक है? That is what I am explaining. है ना? फॉर्मूला ही तो बताया ना मैंने. ठीक है? So I mean, what is there in writing each and every I mean definition and all, वो तुम्हें बुक्स में मिल जाता है. बेसिक थिंग जो हम समझ नहीं पाते हैं, दैट इज एक्सप्लेनेशन, दैट इज कॉन्सेप्ट. So that is what I am dealing with more here. Then definition things you will get everywhere in books, in other classes or something. But what you actually often forget, I mean often struggle to get is concepts. So here I will be dealing more with concepts. Because in this class actually you're sitting here so that you, so that these classes can help you with your competitive exams, right? Like JEE mains, JEE advanced, NEET or whatever competitive exams are there. ठीक है? So इसलिए मैं focus ज्यादा करती हूँ concept पे. Done? So electric field lines for any at any point P because of point charge Q can be written as KQ by R square. Done है? That can also be written as force acting per unit charge. ठीक है? And when we actually try to calculate electric field at point P, experimentally अगर मैं बताऊं, तो we take here test charge, and this test charge we take as Q as, I mean Q का वैल्यू काफी छोटा होता है. It's a very small charge. Why small charge we take? So that this small charge Q is not able to disturb this capital Q charge, because of which we are going to calculate the electric field. है ना? क्योंकि अगर ये कैपिटल स्मॉल Q चार्ज अगर स्ट्रॉन्ग होता है, then it will strongly repel capital Q charge, and in that case it may start moving. Done it? So for calculating electric field at any point P because of certain charge, what we do is क्या करते हैं हम? Yes, test charge will create field. Definitely they will, no matter how weak it is, no matter how small it is. ठीक है? Q तुम्हारा कितना भी small Q ना हो, it will create some electric field. But but here we are interested in calculating the electric field because of capital Q charge. So we are not talking about the electric field getting generated by small q.
So what I'm trying to say is when you have to calculate electric field because of any strong charge at any distance p, what we do is we keep here a test charge which is of very small magnitude. We calculate force का value. Done है. हम ऐसा करते हैं experimentally, and then electric field is calculated as force per unit charge, where charge tends to almost zero. I mean, Q is very, very small. Even if you want to calculate electric field because of this test charge, you can do by using even more smaller value of charge. Done it. So that's always possible. And no matter how small is the charge, there will be electric field around it. है ना? So it will be there. Done it. अब चलो कुछ और कॉन्सेप्ट्स पे चलते हैं. सो इफ देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज, लेट्स से इट इज दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे बनाते हो? ऐसे बनाते हो, ऐसे बनाते हो, है ना? पॉजिटिव चार्ज से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? बाहर की तरफ आ रहा है. तो इट इज लाइक दिस. नाउ द थिंग इज, अगर मैं अब इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, अगर मैं यहाँ पे बोलूं क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, और यहाँ पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, then both are same charge in nature. One is positive, another is also positive. I am trying to calculate, let's say this is second charge, this is first charge. So I am trying to calculate the direction of force acting on two because of one. So what will be the direction of force acting on two because of one? One will repel two, right? So repulsion means it will push it away from itself. So in this direction. ठीक है, इस डायरेक्शन में लगा. अब तुम देखो उसी चीज को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ. लेट्स से ये एक काम करती हूँ, एक सेकेंड, मैं क्लियरली ड्रॉ कर देती हूँ सो दैट यू कैन कंपेयर. ठीक है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज था, ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और यहाँ पे हमारा क्यू चार्ज रखा हुआ था. मैंने क्या बोला? वेयर द फोर्स, इन विच डायरेक्शन फोर्स विल एक्ट? इन दिस डायरेक्शन. इसका मतलब वी कैन से दैट फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. क्योंकि यहाँ पे अगर अगर मैं चार्ज को यहाँ से डिलीट कर दूं, मतलब मैं दिखा नहीं रही हूँ बट चार्ज इज देयर, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज सोन. लेट्स से ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज सोन, एंड यू आर आस्क्ड दैट if we will keep here a positive charge, in which direction force will act? So force will act on this positive charge in the direction of electric field. हमेशा याद रखना फोर्स किधर लगता है? पॉजिटिव चार्ज पे, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ इफ you keep one charge is plus q, another is minus q. So on minus q, force will act in which direction? In this direction. It will attract minus q towards itself. यानी कि फोर्स, चलो सेम चीज को अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रांसलेट करके दिखाती हूँ. सो यहाँ मैंने नेगेटिव चार्ज रखा और यहाँ पे डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज था, है ना, बिकॉज ऑफ विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर. सो दिस पॉजिटिव चार्ज विल अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज, सो फोर्स एक्टिंग विल बी इन दिस डायरेक्शन, यानी कि ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो लंप सब में याद रखना तुम कि फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ, फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज क्या होता है. यही चीजें जब बाद में मैं पूछूंगी तो लोग भूल जाते हैं. ठीक है, इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन होगा क्वेश्चन करने में. डन है. सो इसको याद रखना है. एंड नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा? ऑपोजिट. चलो किसी को डाउट है तो बताओ. किसी को डाउट है तो बताओ. सब लोग समझ गए या किसी को डाउट है? लेट मी नो. ठीक है, अगर नहीं डाउट है तो बेस्ड ऑन दिस इटसेल्फ वी विल डू वन क्वेश्चन. चलो, दिस केम इन नीट 2018. ओके, नवोदय, थैंक यू. यू आर फ्रॉम विच नवोदय? Do this question, let me know.
ओके, क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार। ठीक है, सो क्वेश्चन ये कह रहा है, देर इज एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस h in a uniform and vertically upward directed electric field. So there is electric field in a region. Electric field direction is in vertically upward sense, so it is like this. And then there is an electron falling. Suppose कर लो electron was initially here and it is falling through height h. So let's say up to this height it fell down. ठीक है, up to this point. So it is falling in this field through height h. Done it? So basically vertically upward का मतलब अभी जब जिस रूम में भी तुम बैठे हो उस रूम में अगर तुम लाइन लाइन ऐसे बना रहे हो, so that is basically vertically upward और downward direction. Done. सो सपोज कर लो तुम यहाँ बैठे हो और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है विच इज upward in direction, yes. And there is one electron which is falling down through height h. So initially it must be at certain height, finally it is at certain height, and the displacement that it has covered is h. उसके बाद क्या हो रहा है? Direction of electric field is now reversed. So now in second scenario, there is again electric field in vertical sense, but in vertically downward direction. ठीक है, and now proton is allowed to fall from the rest. और अब क्या है, एक proton है हमारे पास and we are letting it fall from rest through the same vertical distance. It is also falling down through a distance of h. h distance से ये भी गिरा. ठीक है, the time of fall of electron in comparison to the time of fall of proton is what? Done है, किसका time of fall ज्यादा होगा? Okay, that's not correct. You can ignore here gravitational force. क्यों इग्नोर कर सकते हो? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो वैल्यू होता है ना, दैट इज मच स्ट्रॉन्गर देन व्हाट, देन ग्रेविटेशनल फोर्स. क्योंकि व्हेन पार्टिकल इज फॉलिंग डाउन in vertical plane there is also gravity acting, right? But gravitational force will be very little because mass of electron and mass of proton is of range of 10 to the power minus 31 and minus 27. So actually it's very small in comparison to the electrostatic force. So तुम gravitational force को इस calculation में क्या कर सकते हो? neglect कर सकते हो. ठीक है? yes, yes, chain भी हावेल. that's not correct. चेक करो एक बार सही से. Yes, in the option I got total 19 options. 5 of them are correct. Let's now discuss it, ठीक है? So अगर option A is the correct one, अगर देखो, अगर simply gravity का question होता तो कैसे करते तुम? There is a mass m falling through height h. What will be the speed की बात करी है ना? No, time of fall of electron. So in what time this mass will fall through height h? So s equal to equation use कर लो, ut plus half at square. So mass is just starting from rest, it means u is 0, है ना? s is h half gt square. So time क्या हो जाता? 2h by g. Here it is falling down under the influence of electrostatic force. ठीक है, so difference बस यही है कि acceleration की जगह तुम्हें क्या लिखना है? Not acceleration due to gravity but acceleration because of electrostatic force acting. So first case में आप चले जाओ, electron is falling down. Electron is a negative charge. Electric field is acting in vertically upward sense. So force acting on electron in the first case will be in which direction? In this case force acting on electron is in downward direction. क्यों? क्योंकि this is a negative charge and on negative charge force acts opposite to the direction of electric field. तो force downward लगा. force का value क्या होगा? force is what? अभी अभी हमने पढ़ा था electric field क्या होता है? force per unit charge. ठीक है, so force क्या हो जाएगा? electric field into charge. So here force acting will be electric field into charge, that is E के बराबर. ठीक है, ठीक है. ओके, जेएनवी हैदराबाद.
You were saying something? Let me know. So this is force. Acceleration क्या होता है? Acceleration होता है force by mass. So E into E by mass of electron. So acceleration in first case is this. Now come back to the second case. So second case में acceleration क्या होगा? There is proton this time falling in the downward sense. Force will act E into E. Force is same of same value, right? Direction of force will be in downward sense also because here charge is positive, uh, field is in downward direction. So force will act in the direction of electric field because charge is positive. And what will be the acceleration here? Here acceleration will be E into E by mass of proton. देखो इसलिए मैंने पहले ही क्लास में बेसिक में तुम लोगों को बताया था कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में डिफरेंस क्या है। मैंने बताया था ना, सीट दिया था तुम लोगों को। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ऑफ द रेंज ऑफ 10⁻³ होता है। मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो तुम्हारा 10⁻27 kg के रेंज में होता है। तो मास दोनों का डिफरेंट है। तो यहाँ से अगर आप एक्सेलरेशन को कंपेयर करो, मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्मॉलर, सो ए इज ग्रेटर देन ए डैश। ये हमें पता चल गया, डन है। और अगर तुम्हारा ए इज ग्रेटर देन ए डैश, एक्सेलरेशन जाता है तो वो ज्यादा जल्दी से गिर जाएगा। यानी कि आंसर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसे नहीं दिख रहा है तो कैलकुलेशन करके देख लो। एच इज इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ पे? अभी के लिए एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा? ए जी नहीं है। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, कॉमन ए की टर्म में टाइम को निकालते हैं। तो हाफ ए टी स्क्वायर, टी कितना हो जाएगा? 2h/a। ठीक है, सो इन फर्स्ट केस टाइम विल बी हाउ मच? 2h/a, एंड इन सेकेंड केस टाइम इज हाउ मच? 2h/a डैश। अब देखो ए इज ग्रेटर देन ए डैश, सो ए ग्रेटर है, टी1 विल बी स्मॉलर। ए बड़ा है, टी1 विल, टी2 विल बी, सॉरी ए डैश छोटा है, टी2 विल बी बिगर। ठीक है, so what will be the correct answer? The time of fall of electron in comparison uh, to the time of fall of proton is what? Small. So correct answer will be A. Janvi, Haveri, how many of you are not able to understand anything? Raise your hand, just raise your hand. Because that is not going to work anymore, my dear. You need to have a homework thing done. ठीक है, थोड़ा तो ध्यान से देखो तुम लोग। Randomly, if you people are just coming out and saying you are understanding nothing, that is not going to help you, first of all, and also that is not going to help me, क्योंकि तब मुझे समझ में नहीं आएगा कि तुम्हें explain क्या करना है। So be specific, try to be specific. कितने लोग हैं जिनको कुछ नहीं समझ में आया? Can you tell me? How many of you are there? देखो, be frank. You don't need to be scary of anything. ज्यादा से ज्यादा मैं एक दो बात सुनाऊंगी, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं करूंगी ना। ज्यादा से ज्यादा बोलूंगी कि तुम लोगों ने पढ़ा नहीं, अदरवाइज व्हाट एल्स आई कैन से, राइट? कुछ सजेशन दे सकती हूँ, बट अदरवाइज नथिंग एल्स। ओके, ओके। हाउ मेनी ऑफ यू मोर कुडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग वाले कितने लोग हैं ये बताओ? आई कैन रिपीट क्वेश्चन, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट हाउ मेनी ऑफ यू कुडंट गेट एनीथिंग? ये बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट होता है, यू कुडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। इसका मतलब है आइदर यू कुडंट डू द होमवर्क और यू डिडंट, यू आर अटेंडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, बट दैट्स नॉट केस, राइट? देखो इसलिए कहती हूँ थोड़ा मैकेनिक्स पढ़ लेना था, इसलिए कहती हूँ थोड़ी, थोड़ा ना तुम लोगों को भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। क्लास में आकर अगर सोचोगे कि मैजिक हो जाए, मैजिक नहीं होता है यार। मैजिक जब अलोन तुम बैठे होते हो ना तब होता है, व्हेन यू डू वर्क। ठीक है, मैजिक इज देयर, आई विल टेल यू। क्लास में क्या होता है ना, देर इज 1 hour क्लास, वी विल बी डिलीवरिंग कॉन्सेप्ट्स एंड थिंग्स। तुम्हारा एफर्ट एक्चुअली ज्यादा होना है, ऑलवेज रिमेम्बर। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक है अपवर्ड डायरेक्शन में, डन है। और इस इलेक्ट्रिक, जैसे मैं सिर्फ 3 लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लाइंस होंगे बट सारे तो मैं ड्रॉ नहीं कर सकती ना, तो मैंने कुछ ही लाइंस बनाए। और इस रीजन में एक इलेक्ट्रॉन जो है, देर इज वन इलेक्ट्रॉन विच इज फॉलिंग डाउन थ्रू हाइट h. इट इज आस्क्ड हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर इलेक्ट्रॉन टू फॉल डाउन। तो सिंपल है, फर्स्ट केस में पहले तुम टाइम निकाल लो। इक्वेशन ऑफ मोशन यू हैव स्टडीड, राइट? एस इज इक्वल टू क्या होता है? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
So here, if you know acceleration of electron, if you know acceleration of electron, if you know initial velocity of electron, and if you know through what distance electron is falling down, then you can calculate time, right? In the question, it is given through h height it is falling down. Okay? Then so S is given, that is h. And it is also given that electron is falling from rest. So initially electron's velocity is zero. I mean, U is also known, that is zero. Now, what is this acceleration? So you need to see what is the force acting. So electron is falling under the influence of electric field, and force acting because of electric field is how much? Whatever charge is there in electric field into electric field ka value. What will be the direction? That will depend on the nature of charge. If it is negative, then force will act opposite to the direction of electric field. Otherwise, it will be different. Okay. So यहाँ negative charge है. Electric field is in upward sense. So definitely electric force will act in the downwards. What will be acceleration? Force by mass. पढ़े हो ना? So force कितना लगा? QE. What is mass here? QE by M. Mass of electron. So put here now half a t square. A का भी वैल्यू तुम्हें पता है, मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया है. So I have written h positive, a positive, everything positive. Half into acceleration क्या होगा? QE by mass of electron t square. ठीक है? What is the value of t now? क्या होगा वैल्यू? So this is h me into 2 divided by q. ये हो गया. यही हुआ ना टाइम का वैल्यू. सेकंड केस में तुमसे क्या बोला है? सेकंड केस में इट इज सेइंग कि देयर इज प्रोटॉन फॉलिंग डाउन, एंड तो प्रोटॉन के केस में भी सेम कैलकुलेशन करोगे. ठीक है. इन दैट केस इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन इज इन विच सेंस? इज इन द डाउनवर्ड सेंस, एंड प्रोटॉन इज ऑल्सो फॉलिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. So force, proton is a positive charge, force will act in the direction of electric field. Proton और electron का charge का value same होता है, so force will be same. Acceleration will be different क्योंकि mass is different. So here you will write mass of proton. Only acceleration is different. So here acceleration value हमें क्या रखना होगा इस यहाँ पे different. ठीक है. So simply mass will change. If T1 is this or T electron is this, then T proton will be how much? 2hmp by q. अब आप ध्यान से देख लो किसका टाइम ज्यादा है किसका कम है. टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. यू कैन सी हियर, है ना? सो इफ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इट मींस जिसका मास कम होगा उसको कम टाइम लगेगा गिरने में. सो इलेक्ट्रॉन विल टेक लेसर अमाउंट ऑफ टाइम, प्रोटॉन विल टेक ग्रेटर अमाउंट ऑफ टाइम. लेट मी नो नाउ. अगर तुम लोग थोड़ा भी एफर्ट नहीं करोगे तो फिर मैं कैसे कर पाऊंगी? मैं तो नहीं कर पाऊंगी ना, क्योंकि दिस इज नॉट योर 9th और 10th स्टैंडर्ड थिंग. ठीक है. यू नीड टू कैरी सर्टेन बैकग्राउंड एंड मिनिमम बैकग्राउंड. मैं कुछ ज्यादा नहीं तुम लोगों से डिमांड कर रही हूँ. आई एम जस्ट डिमांडिंग द बेसिक थिंग कि थोड़ा सीरियस हो जाओ क्लासरूम में. ठीक है. एनीबडी हु गॉट दिस? हु कुडंट गेट दिस? सॉरी, एनीबडी हु कुडंट गेट दिस? Yes, electron will take less time. Yes. Can you see it now? Even if you are not able to understand it completely, I will suggest you one more thing. Again, go through the question. Try doing it yourself. Okay? Then only you will understand. है ना? Maybe you are lacking somewhere. I cannot understand ना कहाँ पे तुम lack कर रहे हो. तो अगर तुम्हें वैसे doubt पूछना है, you can tell me specifically where you are getting stuck. वैसे पूछो तो मैं बता पाऊंगी, क्योंकि फिर से रिपीट करने का कोई मतलब नहीं बनता, राइट? सो इन दिस केस यू कैन टेल मी. अभी अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो वेयर यू आर एग्जैक्टली गेटिंग स्टक, दैट यू लेट मी नो. ठीक है. टेक योर टाइम, टेक 30 seconds, लेट मी नो. आई एम हियर वेटिंग फॉर योर मैसेजेस. नो डाउट. चलो ठीक है.
नाउ दिस इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज सिस्टम, कितने लोगों को पता है इक्विलिब्रियम क्या होता है? चलो बताओ मुझे, व्हाट इज दिस इक्विलिब्रियम? व्हाट इज दिस इक्विलिब्रियम? एनी आइडिया, एनीबडी? I will appreciate your answers. Let me know. Right or wrong doesn't matter. Let me know. But yes. चलो ठीक है. Yes. What balanced? Yes. Akshay. Akshay. Rama Akshay. Okay. Yes. You're correct. Hemant, what is balance? Forces, right? So equilibrium का मतलब ये होता है ऐसा सिस्टम जो कि बैलेंस्ड है, यानी कि जिसपे नेट फोर्स क्या लग रहा है? जीरो. सो इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो एंड ऑल्सो नेट टॉर्क जीरो. टोटल इक्विलिब्रियम का मतलब फोर्स और टॉर्क दोनों ही क्या लग रहा है सिस्टम पे? जीरो लग रहा है. ठीक है. सो दैट विल गिव यू व्हाट? करेक्ट आंसर. अविनाश, सेम मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ठीक है. क्योंकि फोर्स को बैलेंस होने के लिए कोई भी बॉडी पे अगर इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन लगा तो डेफिनेटली मैग्नीट्यूड ऑफ अनदर फोर्स शुड बी सेम एज 10 न्यूटन बट डायरेक्शन शुड बी ऑपोजिट. ठीक है. तो अभी चार्ज सिस्टम के लिए वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इक्विलिब्रियम थिंग. जैसे ये सिंगल चार्ज है, सिंगल चार्ज है तो इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा. ठीक है. थैंक यू. सो दिस इज अ सिंगल चार्ज, नो अदर फोर्स इज एक्टिंग, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इक्विलिब्रियम, कोई फोर्स नहीं लग रहा. नाउ दिस इज अ सिस्टम, टू चार्ज सिस्टम. ठीक है. यहाँ पे अगर आप इस चार्ज की बात करो तो इस पे फोर्स लग रहा है किस डायरेक्शन में? इधर, बिकॉज दिस क्यू विल रिपेल दिस स्मॉल क्यू, है ना. So how much force is acting? kq square by r square. So this is not in equilibrium. We cannot say this is in equilibrium, है ना. Not in equilibrium. टॉर्क के बारे में अभी मैं कैसे डिस्कस करूं? टॉर्क तो तुम लोगों को 11th क्लास में पढ़ना. टॉर्क इज बेसिकली एनीथिंग, जैसे किसी भी चीज को चलाने के लिए, टू मेक एनीथिंग ट्रांसलेट यू अप्लाई फोर्स, टू मेक एनीथिंग रोटेट यू अप्लाई टॉर्क. ठीक है. एंड टॉर्क इज रिटेन एज r क्रॉस f, where r is the I mean this is totally a discussion of that class, but I would say r is position vector of that force from the point around which you are calculating torque. ठीक है. The least thing that I can say is yes, turning effect, whatever is generating turning effect, that is your what? That is torque. So अविनाश, तुम इसको एक होमवर्क की तरह लो. आज के क्लास के बाद जाना यूट्यूब पे सर्च करना व्हाट इज टॉर्क, कंप्लीट वीडियो उसका एक वॉच करना. ठीक है. सो जो चीजें नहीं आ रही है ना, वी हैव टू पिक दिस. वी डोंट नीड टू एक्यूमुलेट आवर प्रॉब्लम्स. ठीक है. वॉट एवर इज प्रॉब्लम, identifying the problem is the first step and good thing. Second thing is taking the action. So तुम्हें टॉर्क में दिक्कत है, इस क्लास में तो मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकती, है ना, लिमिटेशन है. So what you have to do, go to YouTube, search for torque, learn it, how to calculate torque, how to draw the direction. Do it please. Yes, Hemant, correct. Rotational analog of force. Yes. Yes, Avinash, do it. ठीक है. एंड हियर ऑल्सो इफ यू टॉक अबाउट दिस फोर्स, इस फोर्स पे भी दिस वन विल, इस चार्ज पे भी दिस वन विल अप्लाई फोर्स इन दिस डायरेक्शन. यस रिहाना, इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो. सो दिस इज ऑन दिस ऑल्सो फोर्स इज एक्टिंग. इट मीन दिस इज ऑल्सो नॉट इन इक्विलिब्रियम. जस्ट वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई कि कौन कौन इक्विलिब्रियम में. अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये सिस्टम में कितने चार्जेज है? 3 चार्जेज है ना. And this system will be in equilibrium only if force acting on all the charges is zero. ऐसा नहीं कि सिर्फ एक चार्ज पे फोर्स जीरो लग रहा है, we will say it is in equilibrium. No, because this system consists of 3 charges. So force acting on all the charges should be zero, and then only we will say system is in equilibrium. तो किसी एक पे भी आप फोर्स कैलकुलेट कर लो. जैसे ये कोई भी एक पहले पिक करती हूँ मैं. Let's say on this we are calculating. So negative charge will attract this charge towards itself in this direction. This Q will repel it in this direction. So force will act along this line. Okay. So on this Q charge, one force is acting in this sense, another force is acting in this sense. Definitely, these two forces का sum zero नहीं हो सकता, क्योंकि these two are vectors having certain angle.
वेक्टर का सम जीरो कब होता है? व्हेन दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिटली डायरेक्टेड. सो डेफिनेटली दिस चार्ज इज नॉट इन इक्विलिब्रियम. सिमिलरली आप इस चार्ज की बात करो, इस पे क्यू चार्ज इधर फोर्स लगाएगा, माइनस क्यू इधर लगाएगा. अगेन resultant of these two forces at certain angle is not zero. So this is also what this is also not in equilibrium. ठीक है. Now if you talk about negative charge, then on this negative charge, this q charge will attract it towards itself. This q charge will also attract it towards itself. So minus q पे भी net force लग रहा है. Done. So this is also not in equilibrium. Overall system is not in equilibrium. Even if on any one charge net force is not zero, we will say it is not in, its system is not in equilibrium. That particular charge is in equilibrium, but overall, if you are considering whole charge as one system, then system is not in equilibrium. ठीक है. अब देखो, अब इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि एक्चुअली इक्विलिब्रियम अटेन कैसे किया जाए. ठीक है, क्योंकि फ्रॉम दिस पोर्शन यू विल बी गेटिंग क्वेश्चन. सपोज कर लो हमारे पास दो चार्ज थे, अभी अभी हमने देखा कि दिस टू चार्जेस क्यू एंड क्यू at separation r, if this is one system, then this system is not in equilibrium because net force is acting on both the charges, right? So to make this in equilibrium, now I am trying to keep another negative charge somewhere so that this whole system can be in equilibrium. ठीक है, तो दो चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं था, so we are bringing another third charge and we are trying to see कि उस थर्ड चार्ज को कहाँ रखा जाए, where to place that third charge so that system will be in equilibrium. जैसे यहाँ पे भी हमारे पास पहले ये दो चार्जेस थे, है ना, और थर्ड चार्ज को we kept it somewhere here, and if we are keeping third charge somewhere here, system is still not in equilibrium. इक्विलिब्रियम में नहीं था ये. ठीक है. नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि instead of keeping this minus q charge along any other line, we are keeping it along the line joining these two charges. ठीक है. सो यहाँ पे रखा है. अब देखो फोर्स क्या क्या लगेगा. चलो इस पे फोर्स निकालते, डायरेक्शन चेक करते. सो ऑन दिस q charge, minus q will attract it, so it is this, and this plus q charge will repel this q. So repulsion का मतलब खुद से दूर फोर्स लगाएगा, यानी कि इधर. So both the forces are acting in the same direction. It means it will have a net force acting. Here net force is not zero on this charge. It means this system not in equilibrium because इस system में कितने charges हैं? तीन charges हैं. And on this charge, net force acting is not zero. So system is not in equilibrium. क्योंकि इस सिस्टम में ये चार्ज मूव कर रहा है, सो सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम. अब देखो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है बिकॉज एक मूव कर रहा है, इसका मतलब सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम. नाउ व्हाट वी आर डूइंग कि चलो यहाँ रखने से तो नहीं हुआ, लेट्स कीप इट हियर. सो अगर यहाँ रखते हो, लेट्स कैलकुलेट फोर्स ऑन दिस चार्ज नाउ. सो इफ यू कैलकुलेट फोर्स ऑन दिस चार्ज, व्हाट विल हैपन? सी हियर, this minus q will attract it towards itself and this q will repel this q. So repulsion का मतलब खुद से दूर फोर्स लगाएगा. Again both the forces are in same direction. If net acting on this q is not zero, so system not in equilibrium. System not in equilibrium. ठीक है. So ऐसे भी नहीं रख सकते. थर्ड केस में मैंने क्या किया, दोनों चार्ज के बीच में रखा है. Now let's check the equilibrium of all the charges. So अगर इस Q की बात करो तो नेगेटिव चार्ज विल अट्रैक्ट इट टुवर्ड्स इटसेल्फ, सो फोर्स इधर लगा. दिस पॉजिटिव चार्ज विल रिपेल इट, सो दिस पॉजिटिव चार्ज विल अप्लाई फोर्स ऑन दिस Q इन दिस डायरेक्शन, खुद से दूर भेजेगा. सो बोथ दिस फोर्सेस आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन. सो वी कैन एडजस्ट मैग्नीट्यूड इन सच अ वे दैट दीज टू फोर्सेस कैन बिकम जीरो. क्योंकि अगर एक फोर्स F1 है, दूसरा F2 है, F1 F2 are oppositely directed. And if we can manage the magnitude, F1 can be equal to F2. And in that case, this charge will be in equilibrium. ठीक है. But इस system में और भी दो charges हैं. So let's check the equilibrium of those two charges also. So third case में एक काम करो, बीच वाले का equilibrium हम check करते हैं. So this is this, this is this, this is this. So middle वाले का check करो. Middle वाले पे ये चार्ज इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, अट्रैक्ट कर रहा है, प्लस क्यू चार्ज इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, अट्रैक्ट किया. डन है. दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, सो इट कैन बी जीरो.
Net force can be zero if we manage the magnitude. So there is possibility here also. Possibility है, can be zero. So ये भी इक्विलिब्रियम में हो सकता है. If you talk about this, इसका भी चेक कर सकते हो, वो भी आएगा. So if you have two system of charges like this, and if you are asked where we should keep a third charge so that system will be in equilibrium, then you will say third charge को इन दोनों के कहीं बीच में रख दो. ठीक है, ये एक केस मैंने तुम्हें समझाया. कहीं कहीं क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि सपोज यू आर गिवन one charge is positive, another is negative, and then it is asked where we should keep the third charge so the system will be in equilibrium. So you need to check things properly. ठीक है, डायरेक्शन को properly check करना, then you will get the answer. Clear है? किसी को कोई तकलीफ है तो बताओ. I should pause here so that I can take your doubt. Any problem if you are facing, let me know. किसी को कोई समझने में डाउट है तो बताओ. नो प्रॉब्लम. किसी को कोई डाउट है तो बोलो. I can explain things if you are not able to understand. Let me know whatever you found problematic. बता सकते हो, ठीक है. थ्री चार्जेस आर देयर, तो कैसे अटेन करें इक्विलिब्रियम? बाय कीपिंग थर्ड चार्ज केयरफुली. जैसे अभी अभी मैंने तुम लोगों को बताया कि अगर हमारे पास ऐसा चार्ज था ना, ऐसा क्यू था, दे आर नॉट इन इक्विलिब्रियम. थर्ड चार्ज को हमने यहाँ प्लेस किया, थर्ड नेगेटिव चार्ज को, तो इक्विलिब्रियम में नहीं हुआ. यहाँ प्लेस करके देखा तो भी नहीं हुआ, यहाँ देखा तो मिल गया. ठीक है. सो एक्चुअली दिस इज अ सॉर्ट ऑफ थिंग की जहां पे तुम्हें हर बार चेक करना होगा. डन है कि आई मीन हाउ टू अटेन थिंग्स इन इक्विलिब्रियम. अगर तुम्हारे पास दो चार्ज सिस्टम है, दे आर नॉट इन इक्विलिब्रियम, थर्ड चार्ज को कहाँ रखे कि इक्विलिब्रियम में होगा. फॉर दैट यू नीड टू टेस्ट, you need to test the equilibrium of each charges. So on each charge you see what is the direction of forces acting. If it is opposite, there is chances equilibrium can be there. ठीक है. सो चेक करना है. जैसे देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, तुम लोग एक बार इसको अटेम्प्ट करो, पहले एक बार इसको पढ़ो, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अगर नहीं समझ में आ रहा है तो. ठीक है. रीड द क्वेश्चन केयरफुली, ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, व्हाट्स द थिंग. यस प्रिया, दिस इज नॉट करेक्ट. अभी अभी मैंने बताया है तुम लोगों को इस केस के लिए हाउ यू कैन डू मिस्टेक्स यार. ध्यान से देखो, साइन को देखो, चार्ज के साइन को ध्यान से देखो जो तुमने आंसर किया है. सी इट केयरफुली. प्रिया, रिहाना, यस, वेरी गुड. प्रिया आप रीचेक कर लो, यू आर ऑलमोस्ट करेक्ट. साइन गलत जा रहा है, चेक करो एक बार. ओके, आई गॉट 11 आंसर्स. आउट ऑफ दोस 2 आर करेक्ट. सॉरी, नो, 4 आर करेक्ट. और मे बी नो, ओनली 2 आर करेक्ट. किसने अभी आंसर किया? रिहाना, यू नीड टू रीचेक एक्चुअली. प्रिया रीचेक करो, मैग्नीट्यूड में भी प्रॉब्लम है आई गेस. यस,
क्वेश्चन क्या है देखो, चलो लेट्स सॉल्व इट टुगेदर। सो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था, a charge q is placed at the center of line joining two equal charges, so there are two equal charges, one is plus q, another is also plus q, ठीक है। and now a charge q is placed at the center, so at the center another charge q is placed such that system of three charges are in equilibrium, then q का वैल्यू क्या होना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स से प्लस क्यू और प्लस क्यू के बीच का सेपरेशन आर, ठीक है, डन है। बोथ आर पॉजिटिव चार्जेस, अविनाश, यस दैट्स करेक्ट, वेरी गुड। सो यहाँ पे कुछ ऐसा आया, डन है। अभी अभी हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास दो चार्ज है, पॉजिटिव चार्जेस है, सो टू ब्रिंग दिस टू सिस्टम ऑफ चार्जेस इन इक्विलिब्रियम वी नीड टू प्लेस थर्ड चार्ज हियर, समवेयर इन द मिडल, somewhere in the middle, and that charge will be of negative nature, क्योंकि अगर यहाँ पे तुम इसका इक्विलिब्रियम देखो, इस पे प्लस क्यू चार्ज फोर्स किधर लगा रहा है, इधर, so this small q charge should act force on it in this direction, and it is only possible if this q is a negative charge, so definitely q is a negative charge. Now these two forces has to be equal, so let's say this is f1, this is f2, done है। नाउ F1 का वैल्यू क्या है, F1 का वैल्यू है k q स्क्वायर बाई r स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F2, सो दैट इज k q बाई, डिस्टेंस कितना है, q और स्मॉल q में मिडिल में रखा हुआ है, सेंटर पे रखा हुआ है एग्जैक्टली, देन दिस डिस्टेंस इज r बाई 2, सो दिस इज r बाई 2 का होल स्क्वायर, सो व्हाट विल बी द थिंग हियर, k q बाई r स्क्वायर इंटू 4। अब आप इन दोनों फोर्सेस को इक्वेट कर दो, क्योंकि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होना है, इक्वल, तो मैग्नीट्यूड को मैं इक्वेट कर रही हूँ, एंड व्हाट यू आर गेटिंग हियर, क्या मिल रहा है बताओ, k 1q got cancelled like this, r square got cancelled, a small q is q by 4, magnitude is q by 4, sign is already negative, so answer will be minus q by 4, so correct answer should be what, it should be A। अमिया जेएनडी हैदराबाद, चेक कर लो एक बार एंड लेट मी नो इसको समझने में क्या दिक्कत हो, बताओ। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे दो चार्ज का सिस्टम है, थर्ड चार्ज को वी आर प्लेसिंग सच दैट टू मेक थ्री चार्ज सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो प्रॉपरली फोर्स के डायरेक्शन को चेक करना है तुम्हें, टू कैलकुलेट द साइन ऑफ थर्ड चार्ज यू आर कीपिंग, ठीक है, एंड डिस्टेंस को कैलकुलेट और मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए फोर्स के मैग्नीट्यूड को इक्वल करना है, ठीक है। इज इट सॉर्टेड फ्रॉम एवरीवन साइड, you are able to understand this thing? देखो, I understand you're just starting with electrostat, but I would say for one whole year you have been in touch with class 11 physics, and that is far more complex than what I'm teaching now. So I expect certain level of understanding from you people, and even if you're not having, it's not a worry, but yes, you need to cooperate. Cooperation meaning you need to be first thing more attentive, second thing you need to do proper homework कहने का मतलब ये नहीं what I'm that I'm giving you some questions you have to do that, no, conceptually you have to revise each and everything whatever I'm teaching, and second thing, from that concept you have to do questions from your textbook, be it NCERT or you are doing previous year questions, do it please, ठीक है। So that is a sort of maturity I expect out of you people, ठीक है। चलो, now electric field because of continuous charge distribution, so this is actually an interesting topic। so अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने पढ़ा कि अगर पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वी कैन कैलकुलेट k q by r स्क्वायर, डायरेक्शन पॉजिटिव है तो इधर, ठीक है। But what if charge is not point charge? If there is a rod, if suppose there is a rod and it is positively charged, let's say, and we have to calculate electric field because of this rod, how we will do this? Okay. So this is called continuous charge distribution, where charge is not concentrated at one point. That is, it is not a point charge. Rather, charge is distributed along a length. In this case, the rod has a length. Let's say Q charge is distributed in L length. Then here we define
linear charge density indicated by letter lambda, which is Q by L. Okay. So here charge is not concentrated at a point. It is concentrated along the length. Then so here there is continuous charge distribution. Similarly, अगर तुम्हारे पास disk है and disk में I'm just dividing charge like this. So here charge is distributed in area, not along length, in area. So here we define uh, charge, areal charge density, and that is if here total charge is Q and radius is capital R, then this is charge per unit area. Area कितना होगा pi square. Similarly, if you have a sphere, ठीक है, hollow sphere, ये solid sphere है, ठीक है, and inside that solid sphere there is charge kept. So solid sphere has a volume. So here charge is distributed in a volume, and we define volumetric charge density indicated by letter rho, and it is Q by 4 by 3 pi r cube. So if you encounter any body where, or if you encounter any charge system where charge is not concentrated at a point, rather along the length, in area or in volume, then we actually cannot directly use this kq by r square wala formula. Done it? Because if you calculate electric field at point P because of the rod, then this point charge is at this distance, this point charge is at this distance, this one is at this distance. So all the charges, point charges are at different distance. We cannot use the formula. Then so here integration will come into use. और इसलिए मैं बोल रही थी आप लोगों को कि इंटीग्रेशन का रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो सबसे पहले तो मैं तुम लोगों को ये होमवर्क देती हूँ. होमवर्क क्या है तुम लोगों का, प्लीज तुम लोग करके आना. होमवर्क का मतलब अभी तक जितने टॉपिक्स मैंने पढ़ाया, वट एवर आई हैव टॉट रिवाइज, वट एवर आई हैव टॉट रिवाइज. ठीक है. एंड सेकेंड थिंग, डू इंटीग्रेशन प्रैक्टिस. इंटीग्रेशन का प्रैक्टिस करके आना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में और कुछ समझ में नहीं आएगा. ठीक है. So if you want your understanding to be better, and if you want my job to get easier or possible, easier भी नहीं बोलूंगी, possible, then do practice integration and also do differentiation practice. ठीक है. कितने लोग करके आओगे ये बताओ मुझे. देखो एक चीज बताऊं, अभी से अगर तुम लोग गिव अप करने लगोगे ना या बात नहीं सुनोगे तो क्या होता है ना, धीरे धीरे when 3-4 more months will pass, then there won't be any option in your hand, and then you will completely ignore everything and you will be left with nothing. I am telling you. So it is the, okay, JNV Hyderabad, thank you. So it is the right time when you take things positively for your benefit. Okay, start taking things positively. And second thing, wherever you are lacking, I know it's somewhat your fault. Maybe it's not your fault. Whatever the thing is, reason is not going to help you. You have to take the action. Do take action. Most of you are at home, so you have good access to YouTube and everything, internet, phones, laptops, everything. So do have a look over lectures available on YouTube. There's so many lectures. Okay? So please do it. Okay? Okay, thank you. Thank you everyone. करके आओगे ना सब लोग, तो बहुत ही अच्छी बात है, ये प्यारी बात है कि तुम लोग करके आओगे, एंड आई एम रियली हैप्पी. सो एक्चुअली आई वांट यू पीपल टू बी डूइंग गुड, है ना. who there is no teacher who will want their students to not do good or something like that. We always just strive or work hard for this to happen. So I really crave you people to be doing well. जैसे देखो first day when we started the class there were 80 students, and just now you look at the number of students in the classroom, 35. How many drop? Just see here, because people are not able to survive the pressure. तुम्हें पता है प्रेशर को सर्वाइव करना कितना जरूरी होता है लाइफ में. यू कैन नॉट ग्रो विदाउट इट, यू नो. यू डोंट हैव टू गिव अप टू प्रेशर, यू हैव टू सर्वाइव अंडर इट. ठीक है. यू हैव टू सर्वाइव अंडर इट. और ये सर्वाइवल हम कैसे करना है, दुख से नहीं करना है. वी हैव टू गिव आवर सेल्फ टास्क एवरी डे. हर डे खुद को टास्क दो. ठीक है, आई एम नॉट गुड इन मैकेनिक्स, लेट्स डू 5 क्वेश्चन फ्रॉम मैकेनिक्स. ओके, आई एम नॉट गुड इन रोटेशन, लेट्स टेक 5 क्वेश्चंस फ्रॉम रोटेशन. So when you start doing such small things, na, it actually helps you.
सो मैं बता रही हूँ ना, यहाँ पे अभी 35 दिख रहे हैं. आफ्टर 1-2 months आई एम टेलिंग यू हियर द नंबर विल बी 10 or 5, इवन मे बी इट कैन गेट 0. ठीक है. So this is pathetic, I would tell you. I mean, people are not able to take up words. People are not able to take up pressure. I mean, this is not our identity. In a student life, you have to really work hard. Yes, I'm always there to help you, Kalarsan. You just attend classes, you do homework, you uh, practice things. I'm telling you, after 2 months itself, if you follow things properly, you will feel different. I'm telling you, you will feel different. Not because of me, but because you did things for yourself. Nobody can change you. I'm telling you, nobody can do good for you. It has to come from deep within you, right? You can only serve yourself. Nobody else can do. ये सारे बेकार बातें होती है कि somebody else did something for you. It doesn't work, I would say. मतलब ये at first look it seems like it is working, but it doesn't work. Which calendar, Rama? Avinash, thank you. Which calendar you're talking about? Class wala? I mean, enable classes, right? That is there on the portal. अच्छा एक काम करती हूँ, कल की क्लास में व्हेन आई विल कम आई विल फर्स्ट ओपन द पोर्टल. अच्छा एक काम करती हूँ, अभी अभी खोलती हूँ. लेट मी ओपन द पोर्टल नाउ. ठीक है. आई एम जस्ट क्लोजिंग दिस थिंग एंड लेट मी गो टू द गूगल. आई विल शेयर इट. ठीक है, अभी शेयर करती हूँ. जस्ट गिव मी सम टाइम. ठीक है. ओके अविनाश, बाय बाय. जस्ट गिव मी सम टाइम. Okay, I'm just in the process. Give me some time. Okay, so you must be getting something like this. Have you visited this website, Rama? Sanju Sri, bye bye. 14th कब है? 14th is tomorrow or what? देखो कल संडे को क्लास नहीं होगी, अदरवाइज देयर विल बी क्लासेस. ठीक है. सो यहाँ पे जाओ, अवंती क्लास लिंक्स आर देयर. क्रैश कोर्स, नीट, एनेबल क्लास 12th 11th, मूविंग 12th. इसी लिंक को तुम लोग ओपन करते हो, राइट? इफ यू ओपन दिस लिंक, यू कैन सी हियर दिस इज द क्लास टाइमिंग. ठीक है. एंड दिस इज द फिजिक्स वाला थिंग. लेट लेट मी चेक. मैं खुद चेक करना चाह रही हूँ. सो ओके, सो आई नीड टू स्विच द अकाउंट. यहाँ पे कैलेंडर नहीं लिखा है क्या? देर इज नो क्लास लिंक्स एंड नोट्स इज हियर. ठीक है. स्टूडेंट आईडीज. ओके. लेट मी चेक. Okay, so even if it is not there, I will be sharing. I will share the thing with you. Okay, if you're not getting it, Sunday का class नहीं. Okay, Sanju. ठीक है, Rama. I will do one thing. I will share with you the time. I mean whole calendar. ठीक है, और I will ask my team to update it here also. Maybe they must have updated somewhere. Yeah, right now I'm not able to find it. It must be here somewhere, I guess. I'm not able to see it. Enable classes. यहाँ पे check करते. Let us check. No, it's not here. Okay, I will ask with my team. ठीक है. चलो. अच्छा, there is Bihu. Okay, 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 okay. But there is no as per holiday in Avanti, I would say. So there will be classes.
क्योंकि this is exam time ना, high time this is for students, so there is no holiday actually. We will be having classes, ठीक है? So take time to attend the classes. I will request. चलो ठीक है. ठीक है, Rama, I will forward to you the calendar. Don't worry. चलो ठीक है, everyone. Take care of yourself. Okay, thank you. Bye bye everyone. Yes, please try to attend. ठीक है? क्योंकि if you will miss next class, that will be an issue. We will be discussing things. Bye, Avinash. Bye bye everyone. Bye, take care. Take care.